Professor Ali Ahmad, esteemed Head of Department Entomology, Professor A. Mantu, respected resource person, Dr. Tanveer Ahmad Wani, Associate Professor, Division of Plant Pathology, and Dr. Zahoor, Associate Professor, Division of Plant Pathology, Shalimar. Their participants, Assalamu alaikum. I wholeheartedly welcome you all in the second session. I hope you have enjoyed your lunch. So now let's start with today's first lecture delivered by Dr. Tanveer Ahmad. Let me introduce our professor with all of you. Dr. Tanveer Ahmad has been with this university since 19 years, with 19 years of experience. Sir has more than 50 publications, among which mushrooms, from mushrooms there are 10 publications. Sir has passed out almost 8 master's students, 2 to 3 PhD students, and there are ongoing 4 to 5 students presently working under Dr. Tanveer Ahmad. Sir, please welcome on the stage for the lecture. All of you. So I once again welcome you all for this session. So my lecture is on this introduction to mushrooms, nutritive value and commonly cultivated in mushrooms. So let me come to mushrooms. What are mushrooms? Why we study mushrooms under the division of plant pathology? Mushrooms are macrophages whose protein body is seen in the naked eye. We have a lot of fungi to study in the plant pathology, but those fungi they cause plant diseases. So that's why this subject plant pathology is here. But this mushroom is a macrophage. That is, we can see this mushroom with our naked eye. It is macro. Macro means we can see the naked eye, and micro means for which we have in the microscope. So mushrooms are macrophages whose protein body is seen with the naked eye. Okay? Then they are high in proteins, low in fat, low in carbohydrate supplements. So if we see mushrooms, they have the highest value of the proteins. They come in between meat and vegetables as per the protein value is concerned. They are low in carbohydrates. कार्बोहाइड्रेट जो हमें एनर्जी देता है, मतलब जिससे हमें ये अब डर रहता है कि कार्बोहाइड्रेट की वजह से कि हमें फैट डिपॉजिट ज्यादा ना हो जाए, और इनमें क्या है कि दे डोंट हैव दिस कोलेस्ट्रॉल. फैट में बहुत ही कम होता है और कोलेस्ट्रॉल इसमें तो होता ही नहीं. दे आर प्लेस्ड बिटवीन मीट एंड वेजिटेबल्स. दे आर रिच इन प्रोटीन्स. इसमें पूरे सब जो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स है वो मशरूम्स में होते हैं. जो भी लाइसिन, ट्रिप्टोफैन वगैरह जो होते हैं ना, जो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं वो मशरूम में होते हैं. तो उसके अलावा इसमें विटामिन्स होते हैं. विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें B1 होता है, B2 होता है, B3 है, B5 है, B7 है, B9 है, B12 है, विटामिन डी है, विटामिन के है, और इसके अलावा इसमें मिनरल्स होते हैं. मिनरल्स जैसे पोटेशियम है, फास्फोरस है, जिंक है, कॉपर है, सेलेनियम है, ये भी मशरूम में होते हैं. अगर हम देखें वेजिटेरियन लोगों के लिए ये एक कुदरत का एक तोहफा है, क्योंकि वेजिटेरियन लोग तो मीट खाते नहीं है. अब उनके लिए एक कुदरत का तोहफा है कि क्योंकि इसमें प्रोटीन्स बहुत ज्यादा है. तो मशरूम्स एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सबस्ट्रेट. ये क्या करते हैं, ये अपना जो न्यूट्रिशन होता है वो सबस्ट्रेट से लेते हैं. इट डज नॉट रिक्वायर सनलाइट फॉर देयर ग्रोथ. इनमें जैसे कि बाकी प्लांट्स में क्या होता है ना, उनके लिए सनलाइट जरूरी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, मगर मशरूम्स के लिए ऐसा नहीं है. मशरूम्स के लिए सिर्फ आपको देखना है कि आपका वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए क्या टेम्परेचर रहे, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के लिए क्या रहे. वो हम आपको धीरे धीरे दिखा देंगे कि आपको किस वक्त किस टेम्परेचर की जरूरत है. आपको जैसे दिस इज द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ द मशरूम्स. प्रोटीन अगर हम इसमें देखें, अगर हम मशरूम इसमें ड्राई मशरूम में देखें, इसमें 20 से 30% होता है प्रोटीन. ड्राई मशरूम की बात मैं कर रहा हूँ. फ्रेश मशरूम में अगर हम देखें, फ्रेश मशरूम में 90% वाटर होता है. उसका नहीं, उसकी बात नहीं है. दिस इज द फ्रेश मशरूम, दिस इज द ड्राई मशरूम. ठीक है ना.
उसके बाद फाइबर होता है, इसमें फाइबर हेल्प करता है कोलेस्ट्रॉल कम करने में, और ये डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको हेल्प देता है। उसके बाद विटामिन डी होता है इसमें, दैट इज एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम। कॉपर होता है इसमें, which aids in helping the body absorb oxygen and create red blood cells। सिलेनियम इसमें होता है जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। पोटेशियम इसमें होता है जो बहुत ही जरूरी है, जो ब्लड प्रेशर रेगुलेट करता है। क्या होता है ना कि जिसमें सोडियम ज्यादा होता है वो ब्लड प्रेशर पेशेंट्स के लिए ज्यादा रिकमेंड नहीं किया है, मगर इसमें क्या होता है कि इसमें पोटेशियम ज्यादा होता है। वाई मशरूम्स आर रिकमेंडेड फॉर हाइपरटेंसिव पेशेंट्स, इसलिए हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए कि इसमें पोटेशियम ज्यादा होता है, इंस्टेड ऑफ सोडियम इसमें पोटेशियम ज्यादा होता है, इसलिए ये रिकमेंड हम करते हैं ब्लड प्रेशर हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए। अच्छा, बाकी सब इसमें फास्फोरस, जिंक, मैग्नीशियम जो मैंने पहले बोला ये होते हैं। अगर हम मशरूम्स की हिस्ट्री देखें तो मशरूम्स की हिस्ट्री करीब 1000 साल पहले 1080 में पहला मशरूम चाइना में उगाया गया, वुडियर मशरूम, जिसका साइंटिफिक नेम है ऑरिकुलेरिया स्पीशीज। ऑरिकुलेरिया पॉलीट्राइका या बाकी सब स्पीशीज है, तो उसको सबसे पहले 1000 एडी में चाइना में उगाया गया। उसके बाद 1630 में जो हम ये व्हाइट बटन मशरूम कल्टीवेट करते हैं यहाँ आजकल, उसको सबसे पहले फ्रांस में कल्टीवेट किया 1630 में। ठीक है, तो ये जो व्हाइट बटन मशरूम्स है ना, मशरूम्स का अलग अलग हैबिटेट होता है। कोई मशरूम होता है डंग इनहैबिटिंग, मतलब उसका बेसिक है कि वो गोबर से पे उगता है। अब हमने उसका सिंथेटिक कंपोस्ट बनाया है, मगर बेसिकली हमें देखना है कि इसका बेसिक क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल शीटा के मशरूम है, ये है लिग्निकोलस, वुड इनहैबिटिंग, इसमें बेसिकली ये वुड पे आता है, जबकि बटन मशरूम है डंग इनहैबिटिंग, प्लूरोटस है वुड इनहैबिटिंग। तो इन सब बारे में पहले हमें बेसिक पता होना चाहिए कि किस पे है, फिर उसके बाद हम उसी हिसाब से सिंथेटिक कंपोस्ट बनाते हैं और उस पे उसको उगाते हैं। उसके बाद हम पैडिस का मशरूम है वुल्वरला वोल्वेशिया, ये चाइना में उगाया गया 1700 एडी में सबसे पहले। उसके बाद ऑयस्टर मशरूम, जिसको हम डिंगरी मशरूम कहते हैं, प्लूरोटस ओस्ट्राटस या प्लूरोटस सजोर काजू, ये सबसे पहले कल्टीवेट किया ट्री स्टम्प्स पे, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया ये है वुड इनहैबिटिंग फंगस, जबकि बटन मशरूम इज डंग इनहैबिटिंग फंगस। तो फंगस इसलिए है कि बेसिकली मशरूम इज अ फंगस, वो मैंने पहले आपको बोल दिया कि बेसिकली मशरूम इज अ फंगस। 1961 में बटन मशरूम की कल्टीवेशन सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में सोलन में शुरू की गई। ठीक है, जो इस वक्त डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च स्टेशन सोलन के नाम से, वहां से 1961 में इसकी कल्टीवेशन शुरू हो गई। उसके बाद 1964 में इसकी कल्टीवेशन यहाँ शुरू होगी लाल मंडी श्रीनगर में। ठीक है ना, हालांकि हमारे कश्मीर में बटन मशरूम के लिए इतना मौजून टेम्परेचर है कि हम अगर चाहें ना, नेचुरली हम 2-3 बार तो हम साल में इसको अंडर नेचुरल क्लाइमेटिक कंडीशंस कल्टीवेट कर सकते हैं। बाकी अगर हम चाहेंगे उसके बाद हम इसको पूरे साल भर भी कल्टीवेट कर सकते हैं, मगर हमें टेम्परेचर कुछ मैनिपुलेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए टेम्परेचर इसमें चाहिए अराउंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के लिए इसमें चाहिए 14 to 18 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना, क्या होता है कि जैसे एक, मैं इस स्लाइड को पीछे करता हूं पहले, इसको इस स्लाइड में फिर से आता हूं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मशरूम में क्या होता है कि इसमें 2 स्टेजेस होते हैं। जैसे एक पेड़ के लिए सीड का होना जरूरी है, मशरूम के लिए स्पोर का होना जरूरी है, या फिर किसी भी फंगस के लिए। फंगस में स्पोर होता है, अगर हम प्लांट से कंपेयर करें तो मशरूम में स्पोर होता है, प्लांट में सीड होता है। जिस तरह से एक सीड जर्मिनेट होता है, इसी तरह से स्पोर जर्मिनेट होता है। स्पोर जब जर्मिनेट होता है तो हाइफा बनाता है, जब हाइफा फिर से ब्रांच करता है, हाइफे बनते हैं, और ये फिर माइसिलियम बनाता है पूरा। ये माइसिलियम उस कंपोस्ट में, जो कंपोस्ट होता है उसमें फैलता है, उससे अपना न्यूट्रिशन ले लेता है। इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव स्टेज, मतलब वो स्टेज जिसमें ये वेजिटेटिव ग्रोथ करे। जैसे कि एक प्लांट अपनी शाखें बढ़ाता है, पत्ते फैलाता है, इस स्टेज तक हम बोलते हैं इसको वेजिटेटिव स्टेज, है ना। ठीक, उसके बाद जब ये प्लांट फ्लावरिंग में आ गया, अब फ्रूट बनाएगा, इसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव स्टेज। ठीक है ना। इसी तरह से एक मशरूम के लिए, इसके लिए चाहिए वेजिटेटिव ग्रोथ। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ बटन मशरूम की बात बताता हूँ,
बटन मशरूम के लिए हमें वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए चाहिए अराउंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 22 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और हमें रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के लिए चाहिए 14 to 18 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारा पहला ये स्टेप है कि ये हमारा फुलफिल होना चाहिए। उसके बाद सेकंड स्टेप हमारा है कि हमारी मतलब ह्यूमिडिटी कितनी है। ह्यूमिडिटी शुड बी मोर देन 85%। उसके बाद तीसरी जो रिक्वायरमेंट है कि फ्रेश एयर आना जाना चाहिए। देखिए मशरूम में कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो कमरे की होती है ना, वो अबव 1500 ppm नहीं जानी चाहिए। यूजुअली अगर आप देखेंगे बाहर, अगर हम अभी देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल होती है यूजुअली अराउंड 300 ppm या 400 ppm, मगर कमरे में चूंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं ना, हम लेते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, तो कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल बड़ी होती है। इसी तरह से जो मशरूम का कमरा हो, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड लेवल 1500 ppm तक ठीक है, मगर उसके बाद इसमें वेंटिलेशन होनी चाहिए। तो कहने का मतलब है यू कैन कल्टीवेट मशरूम एनीवेयर अगर आपके पास 4 एसेंशियल कंडीशंस हो। दैट इज नंबर 1 इज टेम्परेचर, नंबर 2 इज ह्यूमिडिटी, नंबर 3 इज वेल वेंटिलेटेड रूम, एंड नंबर 4 इज गुड स्पॉन। स्पॉन क्या होता है? दैट इज द सीड ऑफ द मशरूम। बेसिकली इन लेमन्स लैंग्वेज दैट इज सीड ऑफ द मशरूम, स्पोर जिसपे होते हैं ना इसके मशरूम के। अगर ये 4 चीजें हमें हो तो हम मशरूम को पूरे साल भर उगा सकते हैं। ये 4 कंडीशंस का हमें ख्याल रखना है। तो नेक्स्ट स्लाइड, ये हमें कॉमनली कल्टीवेटेड मशरूम्स है जो हम कॉमनली कल्टीवेट करते हैं। इसमें व्हाइट बटन मशरूम जिसका साइंटिफिक नेम है एगेरिकस बाइस्पोरस, इसको वर्ल्ड वाइड कल्टीवेट किया जाता है। जैसे मैंने आपको बोल दिया, इसमें वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए 22 से 25 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के लिए 14 से 18 डिग्री। इसी तरह से इसका दूसरा है एगेरिकस बाइस्पोरस की दूसरी एक स्पीशीज है एगेरिकस बाइटॉर्कर, जिसको हम बोलते हैं हॉट बटन मशरूम, जिसके लिए थोड़ी सी टेम्परेचर रिक्वायरमेंट ज्यादा है। इसके लिए वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए 28 से 30 और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के लिए 22 से 24। ये दिया हुआ इस टेबल पे। इस टेबल को आप देख सकते हो अच्छी तरह से। इसका आप बाद में आपको इसका ये मैन्युस्क्रिप्ट भी मिलेगा, तो वो आपके मैन्युस्क्रिप्ट जो फाइनली आपको कंपेंडियम मिलेगा ना, उसमें ये सब लिखा होगा। तो अभी आप थोड़ा बहुत इसको समझने की कोशिश कीजिए, और जहां आपको समझ नहीं आता है आप इंटरेक्ट कीजिए, ठीक है ना। इंटरेक्शन से इंसान ज्यादा सीखता है। उसके बाद ओयस्टर मशरूम, इसके लिए टेम्परेचर कहाँ कल्टीवेट होता है वो यहाँ दिया हुआ है। जो जिस जगह पे ज्यादा कल्टीवेट वो इस कॉलम में दिया हुआ है। और इसी तरह से वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए क्या टेम्परेचर चाहिए, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के लिए क्या टेम्परेचर चाहिए। इसी तरह से डिंगरी मशरूम, ये भी प्लूरोटस की एक स्पीशीज है। प्लूरोटस सजोर काजू जो हम ज्यादातर यहाँ कल्टीवेट करते हैं, सजोर काजू स्पीशीज करते हैं। इसमें टेम्परेचर वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए 25 से 27 और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के लिए 19 से 21। अब नेक्स्ट मशरूम जो यहाँ शीटा के मशरूम है ना, ये शीटा के मशरूम अब वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें इस वक्त ग्लोबल लेवल पे, इसकी प्रोडक्शन इस वक्त, इसकी कल्टीवेशन ज्यादा हो रही है ओवरऑल। अगर हम देखें ना यूरोप में, चाइना में, अभी इंडिया में तो हम बटन मशरूम ही ज्यादा कल्टीवेट कर रहे हैं, मगर अगर आप चाइना में देखोगे या अमेरिका में, यूरोप में देखोगे तो शीटा के मशरूम अब बटन मशरूम को पीछे छोड़ रहा है। तो हमें कंसंट्रेट करना अब जाके शीटा के मशरूम पे, ठीक है ना। क्योंकि शीटा के मशरूम में, बेसिकली शीटा के मशरूम में क्या होता है ना, इसमें 2-3 महीने इसमें लग जाते हैं शुरू में। आपको वो आपके इस पर आपको कल डिटेल लेक्चर जो होगा वो आपको कल की जो एक्सपर्ट है वो आपको डिटेल लेक्चर उनका शीटा के मशरूम पे ही होगा। और उनका दूसरा एक मशरूम है इसमें वुडी, ये विंटर मशरूम है, इसमें फ्लैमिया विलोटिप्स। इन दोनों पे उसका कल लेक्चर होगा, शीटा के मशरूम और विंटर मशरूम पे, जो कल के एक्सपर्ट होंगे। इस लेक्चर को आप मिस नहीं करना, क्योंकि बटन मशरूम, डिंगरी मशरूम आपको थोड़ा बहुत पता है। मैं चाहता हूं आप लोग सीखे शीटा के मशरूम के बारे में, कैसे कल्टीवेट करना, विंटर मशरूम फ्लैमिया विलोटिप्स कैसे कल्टीवेट करना है, उसके लिए क्या टेक्निक्स होंगी, है ना। ये सब आपको मतलब सीखना है इस ट्रेनिंग में। मेरा क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली मैंने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से वर्मी कंपोस्ट के इनके बैग्स वगैरह, ठीक, तो मशरूम के हाथ से बात करा, तो उसमें ये है कि सर मुझे ये बताएं कि जो बैग के अंदर टेम्परेचर है वो क्या रहना चाहिए। जब मैंने बैग लाया वहाँ से तो मुझे ये बताया गया कि आपने 2-3 दिन तक इसके अंदर सीड वो स्पॉन नहीं करना है, फिलहाल इसको टेम्परेचर नॉर्मल। आप मशरूम की बात कर रहे हो या वर्मी कंपोस्ट? नहीं, इसकी एग्री इसकी मशरूम की बात कर रहा हूँ। मशरूम की बात, वहाँ से बैग्स मिले, मतलब मैं, अच्छा बैग्स आपने लाए, हमें मैंने बैग्स दिए ठीक ठीक। तो हमें बताया आपने ओनली कंपोस्ट ले लिया वहाँ से, जी है ना।
उसमें कोई स्पॉनिंग नहीं हुई थी? नहीं हुई थी। अच्छा ठीक। तो वो मैंने जब घर लेके आया तो उसमें ये था कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। अच्छा तो अब चूंकि मैं फर्स्ट टाइम इसको कर रहा था इस पे काम, तो मुझे इसके बारे में कुछ इतना खास नॉलेज नहीं था। तो वो फिर मैंने सब घर लिया, तो मैंने 2-3 एक्सपर्ट्स मतलब थे एग्रीकल्चर के, उनसे मैंने पूछा। उन्होंने कहा कि तो 1-2 दिन तक इनको स्टेबल रखें, मतलब नॉर्मल आने दे पोजीशन, क्योंकि वो हीट अप बहुत ज़्यादा उनके अंदर हीट बहुत ज़्यादा थी। तो उसके बारे में ये पूछ रहे क्या हमें जो वहाँ से हम लेके आते हैं डायरेक्ट उसके अंदर स्पॉन डालना चाहिए, यहाँ थोड़ा वेट करना चाहिए? जो उन्होंने दिया होता है वो देते हैं, कुछ लोग देते हैं वो डायरेक्टली कंपोज देते हैं, कुछ लोग देते हैं स्पॉनिंग की हुई होती है। उसमें आपके केस में स्पॉनिंग नहीं उसमें नहीं थी। देखिए जब आप स्पॉनिंग करोगे ना, स्पॉनिंग के 3 तरीके स्पॉनिंग करने की। स्पॉनिंग आप कर सकते हो, मिक्सड स्पॉनिंग कर सकते हो, लेयर स्पॉनिंग कर सकते हो, या सरफेस पर मतलब एक ही ऊपर वाली तह पे कर सकते हो, पूरा उसको मिक्स करके स्पॉनिंग कर सकते हो, या लेयर्स में कर सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल 9 इंच का बैग है तो उसमें पहले आप 3 इंच की करोगे, उसके बाद 6 इंच करोगे, फिर 9 इंच पे, फिर उसके बाद आपको क्या करना, आपको उसको स्पॉन रन होने देना है। ये जो स्पॉन रन का पीरियड होता है ना, ये होता है करीब 15 से 15 दिन तक, 15-20 दिन से, जब तक इसमें पूरी सफेदी ना फैल जाए, जब तक वो जो माइसीलियम है उसका वो फैलता ना जाए। जब वो माइसीलियम उसमें पूरी तरह से फैल जाएगा ना, बेसिकली स्पोर होता है, स्पोर जैसे मैंने अभी आपको बोला हाइफा बनाएगा, माइसीलियम बनाएगा, पूरा ये बना दिया, जाल बना देता है। उसके बाद उसका काम होता है उसमें से न्यूट्रिशन लेना। तो इस पीरियड के लिए आपको टेम्परेचर चाहिए 22 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। बैग के अंदर क्या टेम्परेचर होना चाहिए इसमें? वही मैं कह रहा हूँ ना, उसमें टेम्परेचर होना चाहिए, ये बेसिकली अगर आपको रूम टेम्परेचर होता है ना सर, रूम टेम्परेचर आपको बाहर का हो गया ना 25, तो उसका असर रहेगा ना उसमें भी। उसमें आपको सिर्फ ख्याल रखना है कि उसमें वो ह्यूमिडिटी है। देखिए जब आप पहले फिल करते हो बैग्स में, उस वक्त आप उसको कंपोस्ट को जब निचोड़ते हो ना, आपको आपका हाथ मतलब निचोड़ने पे वो टपकना नहीं चाहिए, पानी टपकना नहीं चाहिए, मगर हाथ में थोड़ा गीला हो ऐसा होना चाहिए, ज्यादा सूखा भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो आपने उसमें डाल दिया, उसके बाद आपको रूम का टेम्परेचर जब आपने ये मेंटेन कर दिया और ये सब चीजों का ख्याल रख दिया, उसके बाद उसमें स्पॉन रन हो जाएगा, ठीक है ना। स्पॉन रन होता जाएगा, इसमें करीब 15-20 दिन लग जाएंगे स्पॉन रन में। तो उसके बाद फिर आपको देखना है क्या ये स्पॉन रन आप चेक करोगे, उसमें उठाओगे थोड़ा सा, आप ये उठाओगे, आप देखोगे क्या ये फैल गया पूरी में, ये जो इसमें व्हाइटनेस है ये क्या पूरी तरह से फैल गया। अगर ये फैल गया होगा तो उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होता है केसिंग करना है। आपको केसिंग करना है। केसिंग क्या होता है, आप पीट सॉइल और गार्डन सॉइल को लाते हो, उसको मिक्सचर करते हो, या आजकल कोकोपीट आता है, कोकोपीट के वो ब्रिक्स आते हैं, वो हम आपको दिखाएंगे वहां, तो उसके जरिए आप उसको वो कर सकते हो। उसके बाद जब आपने केसिंग की, फिर आपको ये टेम्परेचर इसका आप चेंज करना है। इस पीरियड तक तो आपका टेम्परेचर अराउंड 22 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। अब इसका टेम्परेचर रहेगा फिर 14 to 18, क्योंकि अब ये दाखिल हो जाएगा रिप्रोडक्टिव स्टेज, ठीक है ना। तो इसमें मैंने बेसिकली टाइमिंग फिक्स करके रखा है, तो उसी हिसाब से ये चल रहा है खुद ही। तो यहाँ मैं पहुंचा था, कॉमनली कल्टिवेटेड मशरूम्स ये है, तो इनका ये टेम्परेचर दिया गया है, बाकी सब इन पे डिफरेंट एक्सपर्ट्स इस पे बोलने वाले हैं, ठीक है ना। यहाँ मैंने आपको टेम्परेचर और कौन कौन से कल्टिवेटेड है, तो व्हाइट बटन, ऑयस्टर मशरूम, डिंगरी मशरूम, शीटाके मशरूम, वुडियर मशरूम, पैडी स्ट्रॉ मशरूम, विंटर मशरूम, नोमिका मशरूम, मिल्की मशरूम। मिल्की मशरूम इस वक्त साउथ इंडिया में अगर आप देखें ना, मिल्की मशरूम की कल्टिवेशन बहुत ज्यादा हो रही है, और इसमें भी मिल्की मशरूम पे भी एक एक्सपर्ट ये दे रहे हैं, शीटाके मशरूम, विंटर मशरूम, मिल्की मशरूम। और गैनोडर्मा पे हमारे एक एक्सपर्ट आ रहे हैं, डॉक्टर परवेज साहब शालीमार से आ रहे हैं, वो उस पे दे रहे हैं, गैनोडर्मा पे मेडिसिनल मशरूम है वो। उस लेक्चर को भी आप मिस नहीं, इसमें ऑलमोस्ट सभी लेक्चर्स इंपॉर्टेंट है, लेक्चर्स भी इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन भी इंपॉर्टेंट है। नजीब साहब आ रहे हैं वहां से, डॉक्टर नजीब साहब, उसको करीब 10-15 साल हो गए मशरूम पे काम करते हुए, मशरूम सेंटर के वो इंचार्ज है। उनका कंपोस्ट किस तरह से, जो आपका क्वेश्चन है ना कंपोस्ट किस तरह से बनाना है, वो सब उस पर वो देंगे। तो कहने का मतलब है कि ओवरऑल सभी लेक्चर्स इंपॉर्टेंट, इस पे हर एक कोई ना कोई दे रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मशरूम्स कल्टिवेटेड इन इंडिया। ये जैसे बटन मशरूम है, वो ये वाला बटन मशरूम है। तो उसके बाद ये है जी डिंगरी मशरूम, ठीक है ना, ये भी आपने देखा होगा डिंगरी मशरूम। तो इसमें टेम्परेचर मैंने ऊपर फ्रूटिंग टेम्परेचर लिखा हुआ है,
फ्रूटिंग टेम्परेचर क्या जरूरत है, मतलब दिस इज रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के लिए, ठीक है ना। उसके बाद ये आपका पैडी स्ट्रा मशरूम है। पैडी स्ट्रा जो पैडी का स्ट्रा होता है उस पे आता है, तो उस पे इसका नाम पड़ गया है। पैडी स्ट्रा में क्या होता है, इसमें बोलवा होता है, खैर इसमें भी आगे चल के लेक्चर डिटेल में होंगे। उसके बाद ये आपका है जो हम देख रहे हैं जियोपोरा। अगर हम बारामूला डिस्ट्रिक्ट से होंगे, आप देखते होंगे कि बारामूला टाउन में अक्सर कन पापड़ छाते भूज में कन पापड़ ये होते हैं, यहाँ बेचते हैं यहाँ। तो इस पे भी अब चल रहा है काम, इस पे भी काम हो रहा है। ये दिस इज द लिटिल मशरूम ऑफ ड्राई सैंड साइटस। तो इस पे भी डिस्ट्रिक्ट बारामूला में अगर आप देखें तो मार्च अप्रैल के महीने में इसको बेचते हैं वहाँ, तो इससे अच्छी खासी इसमें इनकम आती है। तो उसके बाद मेडिसिनल मशरूम, जैसे मैंने आपको बोला गैनोडर्मा और कॉर्डिसेप्स, ये दोनों मेडिसिनल मशरूम्स है। इस पे डॉक्टर परवेज साहब हमारे इसने पीएचडी किया है इसी पे, गैनोडर्मा और कॉर्डिसेप्स पे, गैनोडर्मा पे उसने काम किया डॉक्टर परवेज साहब। तो वो भी जोर साहब के साथ उनका था, मगर मैंने इस लेक्चर को इसलिए पीछे रख दिया, मैंने सोचा पहले आपको एक इंट्रोडक्शन पता चले, अदरवाइज वो कह रहे थे कि वो आज आ सकते थे, तो मगर मैंने सोचा नहीं, आपको स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाए। तो गैनोडर्मा, इसमें इसको ऋषि मशरूम बोलते हैं, जापानीज में इसको लिंग्जनी बोलते हैं। ये वुड इनहैबिटिंग मशरूम है। ये इसको हम वुड्स पे ही करते हैं। इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर दिया हुआ यहाँ 26 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के लिए 24 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा एक कॉर्डिसेप्स है, कॉर्डिसेप्स मिलिटरिस, इसके भी स्पीशीज है। इस पे हमारा एक डॉक्टर फारूक साहब यही है, हमारे यही डिवीजन ऑफ पैथोलॉजी में है डॉक्टर फारूक अहमद भट्ट, जिनके यहाँ ये हमारा इनकी पीएचडी स्टूडेंट है। यहाँ और भी बहुत से स्टूडेंट्स हो गए यहाँ, डॉक्टर फारूक अहमद वो है स्टूडेंट, एमएससी स्टूडेंट, देन मेनी स्टूडेंट्स फारूक साहब आर हियर। तो ये आपको लेक्चर देंगे कॉर्डिसेप्स पे, कीड़ा जड़ी मशरूम। वहाँ लेक्चर शेड्यूल पे अगर आप देखेंगे ना, कीड़ा जड़ी मशरूम लिखा है वहाँ, इस पे आपको डॉक्टर फारूक साहब लेक्चर देंगे पूरा, किस तरह से इसको कल्टिवेट करना है। तो मैं कहने का मतलब इसमें हर एक इंपॉर्टेंट मशरूम है, हर एक इंपॉर्टेंट लेक्चर है, हर एक प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है, और इसलिए आप किसी भी इस चीज को मिस ना कीजिए, ठीक है ना। तो इस पे फारूक साहब आपको अच्छी तरह से बोलेंगे पूरा, क्योंकि ये जो मशरूम है ना, इसमें नीचे ये कीड़ा है, ये कीड़े पे बेसिकली कीड़ा जो इसको क्यों बोलते हैं, कीड़े पे उगता है। मगर अब हमने क्या किया है कि हमने देखा जो कीड़े में होता है वैसा एक सिंथेटिक कंपोस्ट बना है ना, तो किस कैसे उगेगा वो आपको वो बताएंगे फारूक साहब इसमें। तो इसमें और भी था, इसको और भी अभी नेक्स्ट हाँ, इससे पहले बस काम करना। हाँ, अब ये मॉर्चुला है, या इस पे मॉर्चुला, इसको तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, है ना। तो ये मशरूम बेसिकली इसको गुच्छी बोलते हैं। ये मशरूम जो है ना, ये आता है दूसरे डिवीजन में, अगर आप साइंस स्ट्रीम से जो है, ये एस्कोमाइकोट, जो अभी तक जो मशरूम थे ना वो बेसिडोमाइकोटिना में थे, खैर उसके साथ हम ज्यादा टच नहीं करेंगे। ये थोड़ा उनसे डिफरेंट है क्योंकि इसमें एस्कोस्पोर्स है। हम ये भी देखते हैं कि किस मशरूम में कौन सा स्पोर होता है, किसी में मोस्टली मशरूम में बेसिडोस्पोर्स होते हैं, ये वाला अलग से है, दूसरा इसमें एस्कोस्पोर्स होते हैं। तो इसके कल्टीवेशन के बारे में भी, इसमें क्या रिक्वायरमेंट्स है, इसमें किस इस पे होता है, ये तो वो बताएंगे। ये फिर से आ गया जियोपारा पे। तो ये मैं मेडिसिनल मशरूम्स आपको बोल रहा था, तो इस पे तो हो गया। तो ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। Thank you so much, sir, for such an informative lecture. I hope our participants have been well introduced with the mushrooms. So, any of you have any questions, please put your questions. Yes. Any of you have any questions? आप में से अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछना है सर से, आप अगर कोई भी क्वेश्चन हो इस रिगार्डिंग आप कर सकते हो, तो यू आर मोस्ट वेलकम। I think there is no question. Okay, let's proceed.
So now I would like to welcome our next resource person, Dr. Ahmad, Associate Professor, Division of Plant Pathology. Yes, sir. Division of Plant Pathology, SKUAST-KASHMIR, Shalimar, for the lecture on techniques in culture preparation and preservation of mushrooms. Along with that, sir is going to give you a practical demonstration on mushroom culture preparation and preservation. Let me give you a brief introduction about sir. Sir is a very renowned professor there in the Division of Plant Pathology, SKUAST-KASHMIR, Shalimar. Sir has more than 100 publications in the field of plant pathology itself and 16 years of experience. He has more than 5 master's students that have worked under sir, 2 PhD students, and ongoing 4 students are working under the guidance of sir. Sir, I welcome you on the stage to deliver the lecture. Thank you. Thank you for the introduction. First of all, I would thank to organizers of this training, especially Professor Tanveer Sir, for inviting me to deliver a lecture in this training program. So before I come to this, my presentation that is on techniques in mushroom culture preparation and their preservation, I would first like to tell you about the culture, what is basically the culture of mushroom. So you know, those who are aware about the mushroom cultivation, they may be knowing that they know spawn and they know compost. So spawn, what do you know about the spawn? What is basically the spawn? You see it in the form of seeds and you see it like weed grain. Basically it is not a weed grain, it is basically the culture of mushroom that is grown on that weed seed. So because the culture of mushroom is very small, we cannot carry it. So weed grain act as a carrier for this mushroom culture, and this act as a medium for the growth of that culture. So that means before spawn, we need some culture in order to prepare that spawn. Okay? So that is my presentation, how we make that culture, what are different techniques that we use for the preparation of that culture, and then we use that culture for the preparation of spawn. So this is basically my lecture. So coming to my lecture, as Dr. Tanveer Saab has already discussed about the mushroom, that he told you that it's basically a fungus. Now you know it's a fungus. So in case of fungus, you know we have a basically, as again Tanveer Saab has told you, that it is like the spore of a fungus is like a seed of a plant. So basically the fungus growth starts from the spore. Okay? So what is the spore germinates? Then it forms a mycelium, which is the vegetative part of the fungus. It is again like a plant has a vegetative part and then it has a reproductive part also. So vegetative part of the fungus is mycelium that you see in this slide. I will show you. And basically this mycelium is generated from the spore. When the spore is generated, then this mycelium is formed. So why I am showing this slide? Here you will come to know which part of the fungus, which part of the mushroom we can use for the preparation of culture. So here you see, these are the spores of the fungus, and we, in case of mushrooms, most of the mushrooms, we call them bacillospores. As Tanveer Saab told you that we have another mushroom that is mortilla. That forms an ascospore. But most of the other mushrooms, they form bacillospores. So it starts from bacillospore. Once these bacillospores germinate, they will form mycelium. Okay? They will form mycelium. And this immediately the mycelium that is formed of the germination of the spore, we call it primary mycelium. Okay? You remember this thing? We call it primary mycelium. So this primary mycelium for a short period of time. So when this primary mycelium find another primary mycelium, which is compared with this primary mycelium, they fuse and then for the second type of mycelium, that is called the dikaryotic mycelium or secondary mycelium. So why I am telling this? Most of you may be having an apple orchard or orchard in your place.
So in case of red leaf variety, we need for pollination purpose we need another variety. You know. So similarly, in case of this mushroom, once the primary mycelium is formed, it will not form a secondary mycelium, it will not form a fruiting body. It is only the secondary mycelium that forms the fruiting body. So how this secondary mycelium is formed, one of these two types of primary mycelium will fuse simply with other, one will donate this duplicate another mycelium, then the rest of the mycelium that are formed, which is the secondary, which we call as secondary mycelium or primary mycelium, it will be having a two. So this mycelium only, which we call dilated mycelium or secondary mycelium, it is only this mycelium that will form this type of fruiting body that we call a mushroom. So otherwise, if this mycelium is only there, this primary type of mycelium, it will not form a fruiting body. It will form a mycelium, but it will not form a this fruiting body. Because your mushroom is composed of secondary mycelium. It is only formed by the secondary mycelium. So this thing you know. Now let us see how we can use this mycelium or spores for the preparation of mushroom culture. In general, because we have so many fungi. We have some beneficial fungi, we have some harmful fungi also. So, do you know any fungi which are harmful to us, which is harmful to humans? Because fungi there are so many fungi. Some are beneficial, like mushrooms, they are beneficial ones, and we have harmful fungi also. Like fungi which cause diseases in plants. आपके पास तो बहुत है ना, तो आप जानते हैं कि वहाँ पे कुछ ऐसे फंगे भी हैं जो प्लांट में डिजीज भी करते हैं ना, they are harmful ones, and this type of mushroom is beneficial one. And we have fungi which need living host for their survival. They cannot take nutrition from dead material. They always need living host for their nutrition. So that type of fungi, they are harmful because they need their nutrition from the living one, so they have to parasitize the living host in order to take the nutrition. But these type of fungi, like mushrooms, they can take their nutrition from dead material. Okay? So they can use this dead material and then they absorb these nutrients. Because fungi, they don't have chlorophyll. Like plants, they don't have chlorophyll. They cannot make their own food. So they have to depend on either on the living hosts or dead material to take their nutrition. So they take their nutrition from the dead material. So in general, fungi, when we use a fungi for their culture preparation, we can use their mycelium that is formed after the germination of spores. Either we can use mycelium or we can use spores. And in case of fungi, we have two types of spores, because most of you are well qualified and most of you have a science background. You may be knowing that fungi is having a asexual spores as well as sexual spores. So that means we can use mycelium for the culture preparation, we can use asexual spores, and we can use sexual spores. But in most of the mushroom fungi, we mainly have a mycelium, then we have a sexual spores. Like white button mushroom. In case of white button mushroom, there is no asexual spore. There is only sexual spore, and that sexual spore is basidium spore. That we call as basidium spore. It's basically sexual spore. And I will not go into that detail. What is asexual spore? What is sexual spore? So that means in case of mushroom fungi, we can use mycelium for culture preparation. We can use sexual spore for culture preparation. Now, what are different methods, different techniques by which we can prepare a culture? So, when we use tissue or mycelium of a mushroom or a fungus to prepare a culture, that is called as tissue bed method. So, when we use mycelium of a mushroom to form a culture, that is called as live tissue bed method. And when we use spore of that mushroom to form a culture, that is called as spore print method. And in case of spore print method, again we have two types, that is mixed spore method and single spore method. So before preparation of any culture, now we can use spore, we can use mycelium. But this fungus needs some substrate, some medium in order to grow. Now it cannot grow as such. It needs some substrate, some medium, so that it can grow. And what is that medium for when we prepare a culture? We call it potato dextrose agar. There are other mediums also, but mainly we use potato dextrose agar. And what is this potato dextrose agar?
as the name suggests, it consists of potato, then dextrose is one chemical for nutrition, and then we have agar. Agar is some material which solidifies the material. If we don't use agar in that material, it will be in a liquid form. But we want in a solid form this medium, so we add agar that solidifies it. How it solidifies? Because at low temperature, below 45 degrees Celsius, this remains in a solid media, and if we give it 45 degrees above temperature, it will melt and it will be in a liquid form. So agar we are using just for solidification. Now we have other medium also, but mainly we use potato dextrose, so you can use potato dextrose. It's a simple medium. You can simply bring potato from the market, and you can bring dextrose. It's not so much costly, and you can use agar in order to make this medium. Then this is first method, live tissue method. If you are using any tissue of the mushroom, that means that tissue will be consisting of what? It will be consisting of mycelium. है ना? मैंने आपको पहले ही बताया था कि मशरूम इज मेड अप ऑफ डाइकैरेटिक mycelium. जो मैंने पहले आपको कहा था, there is primary mycelium, two primary mycelium fused, they form dicharatic mycelium, and from that dicharatic mycelium, tissue is formed. But inside this tissue, inside this mushroom, there are spores also. If you have seen anybody has seen this this button mushroom, आपने देखा किसी ने button mushroom? So initially it is in a button form, है ना? Close होता है, button form में होता है. But later on it gets exposed. Umbrella खुल जाती है ना? तो उसके नीचे अगर हमने देखा ना, umbrella के नीचे there are gills, ऐसे बने होते हैं ना gills. तो उन्हीं gills में इसके spores होते हैं. But here we are not using these spores. We are just using the tissue of that mushroom in order to make the culture. So what's the technique of doing? इसके बाद शायद आपका practical भी है, तो उसमें मैं दिखाऊंगा. They may be having some mushrooms. I will show you how to take the tissue from this mushroom. Basically, what we do, we cut the, because you know mushroom is having the two parts. एक जो stem होती है ना इसकी base की, और दूसरा होता है umbrella shape का, है ना? तो जो stem है इसकी वो हमें काटनी इस तरह से. Vertically हमें we have to cut the stem. Then we take the tissue where the stem and the cap joins. ठीक है? जहाँ पे उनका joint होता है ना stem और cap का, वहाँ से हम we take tissue from that part and then transfer that tissue on medium which we have already prepared. जो मैंने आपको कहा in this case is potato dextrose agar. और उस potato dextrose agar को हम कहाँ पे transfer करते हैं फिर media बना के? Basically when we prepare media we then sterilize it. It should be all sterilized, है ना? And that media we sterilize in autoclave. That will be a practical part of it. वो आपको सब दिखाएंगे ये. तो we need autoclave to sterilize that medium. And then after sterilization of that medium, we pour that medium into एक गिलास में होता है, उसको हम पैट्री पैलेट बोलते हैं, गोल होते हैं, उसमें उसको pour करते हैं. Then we take this tissue from this mushroom and then we transfer that tissue on the center of the पैट्री पैलेट. तो उस medium के center पे रखते हैं. Then after that we incubate that पैट्री पैलेट. Why incubation? Why do we incubate this pellet? In order to provide an optimum temperature to the mushroom, है ना? अभी आपको तनवीर साहब ने कहा था, mushrooms need, most of the mushrooms need 25 degrees Celsius temperature for their vegetative growth. तो वो इसको optimum temperature मिल जाए. In order to that we keep it in a BOD. BOD एक cabin होता है जिसमें आप you can give a optimum temperature for the growth of this fungus. Then उसके बाद आपने इसको BOD में रखा, तो then you will see this type of growth formation in the pellet. This type of white, and this we call as, this type of growth we call as culture of the fungus. You know, basically this lecture is about how to prepare a culture. So this is how we prepare a culture of mushroom, and this is a method from tissue which we call as tissue method. Then there are advantages of this method also, and there are disadvantages of this method also. So what are the advantages? It is easy. We can make a culture from any part of the mushroom, but preferably it should be from joint of this stem and cap. Then cultures can produce fruiting body. Now I will ask you a question. जिसने ये मेरा lecture अच्छी तरह से सुना होगा ना? Why I say कि this will give a fruiting body? है ना? There are some other methods which will give a culture, but they will not give a fruiting body. ठीक है? ये आपको fruiting body क्यों नहीं देगा? ये दे सकता है. ये वाला जो culture है ना, इससे जो आप mycelium बनाएंगे, उस culture से आप फिर spawn बनाएंगे, that spawn will give you fruiting body. But there are other methods like single spore method, they will not give you a fruiting body. क्यों नहीं दे सकते हैं?
यही क्यों दे सकता है? Exactly. So this culture we have prepared from tissue, which is consists of a dikaryotic mycelium. And in the beginning of my lecture, I said it is only the dikaryotic mycelium that can form fruiting body. And this is true for some fungi which we call as heterothalic fungi. Heterothalic fungi means they need a compatible strain in order to make a dikaryotic mycelium. Okay? But there are some fungi which are homothalic, they don't need this compatible strain. Okay? So this is their advantage. We can get a fruiting body from this culture, and this is easy to prepare this culture. But there are disadvantages also. What are these disadvantages? Once we take a mushroom for culture preparation, we have to do immediately, within 24 to 28 hours. If we keep it like as such, and we after 24 hours or 28 hours we are doing this culture preparation, this mushroom may decay, and there can be so many saprophytic growth on this mushroom, and we will not get a pure culture. We may get some contamination. So this is disadvantage of this culture. Then second method. This was tissue pit method, where we get the culture from tissue of the mushroom, and then we have spore print method, where we get culture from the spores. We have to harvest the spores from the mushroom. Then we can use these spores for the culture preparation. So spore print method is, I said कि we have mushroom, है ना, और उस mushroom के अंदर फिर spores होते हैं. We have to first harvest these spores from the mushroom. Then these spores can be used for the culture preparation. So for the harvesting of spores, there is one technique that is there. First you have to cut the stem part of the mushroom. Then you keep this cap, this pipe, on the picking paper. Then cover this paper and this cap with glass jar, okay, so that it is not disturbed. So after 24 hours, when you will come, you will see all spores are harvested. They are on the paper. Okay? Now it is only the spore mass which is on the paper. Now this spore mass you can preserve for future use, or you can immediately use this for culture formation. So this is spore mass. You can preserve it, as I said. You can preserve it in a polythene bag for future use, or you can immediately use this for culture preparation. How we use this for culture preparation? There are different methods for culture preparation. Once you have this spore print, spore mass, then there are different techniques to use this spore mass for culture preparation. One is called as scalpel or streaking method. Here you just dip the needle in this spore mass, then streak the spore mass. जो मैंने आपको पहले दिखाया था पैट्री पैलेट पे मीडिया है. तो once you touch the needle with the spore mass, then you streak that spore mass on the surface of the medium. So after incubation of that pellet, you will get a culture of that. Then second is paper rubbing. You have a spore print, spore mass on the paper. You can just rub this paper. Spores will fall on the media, and that will produce the culture. Then you have spore sealing method. In this method, what we do, we use this spore mass and we make a spore suspension in water. We drop it in water, then we make a spore suspension. Then with the help of syringe, similar as a syringe, we pick some spore, this volume of this spore suspension, and inject that spore mass on the surface of media. Again, that you have to incubate, and that will give you a culture. Then we have single spore method also. Single spore method means we are using a single spore to generate a culture. So how we will do it? We will again make a spore suspension in water, stabilized water. Then we will dilute it and spread some part of this solution on the media. Then individual colonies that are growing there, they will become a single spore, because they have already diluted the spore suspension. When we spread that spore suspension on the surface of the media, there will be colony growing, and these colonies will be from a single spore. You pick that single spore colony, and that will be a culture from a single spore, and that we call as single spore method. So again, this spore method has its advantages and it has also its disadvantages. So one advantage is viable culture potential fruiting bodies can be produced. So if we are using mixed spore mass, then there are chances that we will get a fruiting body. Because in case of mixture of spores, we will be having chances are that we will be having two compatible strains here. Because it's a mass of spores, we will be having both compatible strains there. They will form a mycelium, first primary mycelium, then they will form a secondary mycelium, and from that type of culture we will get a fruiting body also. But when it is a single spore method, if it is a single spore method,
from single spore method we will get a culture, we will get a mycelium, but if we develop a spawn from that culture, we will not get a fruiting body. Again, reason is same, because once it is only a single spore, it will form a primary mycelium, but it will not find compatible strain, because it is only single spore. There will be no compatible strain, it will not form a digratic mycelium, so there will be no fruiting body from that type of spawn. So that is a disadvantage. But why then we use this single spore method to generate a culture? No. So why we are using this single spore method? If it is not going to give a fruiting body, then why we are using this single spore method? Why? Because it is for an R&D purpose. Tomorrow if you are going to start this venture as a big venture, then maybe you are doing R&D part also, research and development part also. So for that person, sometimes you need a pure strain. So you can collect different strains and then cross these strains so that you can see which compatible strains, whose strains can give you a strain which is giving a good yield or which is having some good characteristics. So it is for that purpose, it is for research purpose. Then this is culture, how we develop a culture by any technique, whether it is a tissue technique, whether it is a spore technique. Then finally we use this culture that we have developed, this culture we use for spawn production. And for spawn production you can use the spawn that you might have seen, it consists of a weed grains. So it is not only weed grain that you can use, different mushrooms we have different grains that we can use maize grain, we can use weed grain. So commonly we use weed grain. So then we inoculate this culture that we have developed, we inoculate it on the weed grains. Then finally we have a spawn. Okay? So इसके लिए फिर क्या करते हैं? What is spawn? Spawn is, then we say it is a seed for mushrooms. Basically it is a mushroom, it is a culture which is seed for the mushroom, but this culture needs a substrate, this needs a carrier, only that we inoculate this culture on the grains, so that we have a culture, we have a spawn, so that we can carry it and we can use it for mushroom production. So that is basically spawn. So for again, because we are using weed grains, we can not use weed grains as such. We cannot use them for a substrate for culture. Maybe they may be already contaminated. If we directly inoculate this culture on the seeds, there can be have different types of organisms on seeds, and they will contaminate our culture. They will not give a pure culture. So for that, so this is the ingredients that we use for the culture, this preparation of spawn. We use whole grains, that can be wheat grain, that can be maize grain, 10 kg. Then we use gypsum and we use chalk powder. Why we use gypsum and chalk powder? In order to maintain the pH and in order to avoid the clod formation. Okay, this is for that purpose. Then how we sterilize that material? Because we have to, as I said, it is already contaminated by so many organisms. So in order to avoid that contamination, we first prepare these wheat grains for inoculation. So how we prepare it? We first boil them, we make them soft, then we mix all this gypsum and other things at the rate of 2% gypsum and at the rate of chalk powder at the rate of 0.5%. Then we fill these material in the bottles, which is the glucose bottle आपने देखी होगी ना, उनमें fill करते हैं. Then we autoclave that grain. क्योंकि उसको autoclave करने से क्या होता है? Autoclave क्यों करते हैं? Autoclave is for sterilization purpose. Autoclave is basically, it is like a pressure cooker that we use at home. So it increases the temperature, it increases the pressure. By that temperature and pressure, it gets sterilized. Whatever material we put in the autoclave, that gets sterilized. So after sterilization, we cool this grains. How we put them in this autoclave? We put these bottles in the autoclave, then we sterilize them at a specific temperature and pressure. Then we inoculate this bottle. Okay? This is how we inoculate. जो हमने culture बनाया था, it can be in the battery pellets, it can be in this is called as test tube. It can be in test tubes, it can be in battery pellets. From that you take some bit of mycelium and then inoculate it on wheat grains. जो हमने अभी prepare किया ना wheat grains के लिए, तो उसमें आप इसको inoculate करते हैं. Then finally you incubate that bottle in a BOD. This is BOD. इसमें incubate करते हैं in order to provide optimal temperature. Then finally you get a spawn. So now it is ready for inoculation in the compost, so that you will get mushroom. So this is story about how we make a culture. Then from that culture, how we inoculate that culture on any type of substrate. It can be wheat grain, it can be any grain, so that we get finally a
this type of bottle, which is we call as SKUAST. So second part of my presentation was, now we have prepared the culture. Okay? Now maybe immediately we don't need this culture in order to make SKUAST. So for a period till we use this material, we need to preserve that culture, because it is a living thing. It is a living thing. It is growing on a media. So media finally it will exhaust. Once the fungus takes nutrients from the media, finally it will exhaust. And second thing is, there will be accumulation of toxic substances in the culture, and this will cause the death of the culture. So in order to avoid that thing, we need to preserve our cultures. And there are different methods of preservation of cultures. So there are two types of methods of preservation of any culture. It can be a mushroom culture, it can be any culture, bacterial culture, whatever you are interested in. So there are two methods basically. One is short-term method, where we can preserve our cultures for 2 months, 3 months, mostly 3 months, up to 3 months, depending upon the culture. Then we have some long-term methods that are for to preserve our cultures for up to 10 years also. So among the short-term methods, we have subculturing method, we have refrigeration method, then we have mineral oil method, then we have paper disc method also. And in case of long-term methods, we have cryophilization and lyophilization. So in case of short-term methods, first method that is said, it is subculturing method. What is subculturing basically? It is, you have a culture, you want to preserve it for 1 month to 2 months. Once the medium is exhausted, you immediately transfer that culture into new medium. Okay? So before the medium is exhausted and there is accumulation of some toxic substances, you immediately transfer that culture, bit of that culture on another slant, so that it will have a fresh medium to grow. So that will keep it live for 2 to 3 months. So once that new material is again extracted, before that you will again transfer it to new culture. By this way you can preserve your cultures for 1 to 2 months. Then there is refrigeration. What is refrigeration? You keep your cultures in a refrigerator, and in case of refrigerator, we have 4 degrees Celsius temperature. So lowering the temperature, it will slow down the growth of the fungus. So once the growth of the fungus is slowed down, so it will be preserved for a longer period of time. It will exhaust the nutrients less, and there will be accumulation of these toxic substances less. So it will prolong its shelf life, but it also needs then subculture. It will not keep it for a more period of time. You need to subculture it again. Once it is refrigerated, maybe in case of simple subculturing method, you can keep it for 2 months, but by refrigeration, you can increase it for 1 or 2 months also. So again, it will need subculture. So there are advantages and disadvantages of this method also. It's a simple method, easy to recover the culture. Okay? No special technology is needed in, just you have to subculture it on the media. Then disadvantage is that while subculturing the culture, it may get contaminated. Okay? So that is disadvantage of this culture, this method. Then you have mineral oil method, one short-term period of preservation. So what we do in case of mineral method, so the culture that we have in a petri pellet or in a saran, you put mineral oil on the top of that culture so that there is no oxygen. Okay? You provide an anaerobic condition because your culture needs oxygen. Once you put mineral oil on the top of the culture, there is no oxygen supply to the culture, and the growth of the fungus will be stopped, and this culture will be preserved for more period of time. Then long-term method, as I said, one method is cryopreservation, and in case of cryopreservation, what we do, in case of refrigeration, it was 4 degrees Celsius, but as I said, at 4 degrees Celsius, we can have some growth, but here we store it at minus 190 degrees Celsius, and that is only possible in case of liquid nitrogen. We put them in liquid nitrogen, so that there is very much low temperature. At this point of temperature, there is no growth of the fungus, and this remains viable for a longer period of time. Then another method is, last method is lyophilization. In case of lyophilization, what we do is also called as freeze drying method. First we freeze the culture at minus temperature, very low temperature. Then we dry it. We dry it means we take all water to a vacuum. There is some special equipment for that. We remove the water from the culture. We dry it. Then we can preserve it for a longer period of time.
So these are some, but there are advantages of these long time methods and there are disadvantages. Advantages, we can preserve our cultures for 15 to 20 years, but the disadvantage is it is time consuming and it's costly method. Everyone cannot afford this type of equipment for preservation of culture. So this was all about my lecture. So if you have any queries, you can ask, please. सर मैं एक चीज़ समझना चाह रहा हूँ सर, जो भी सर इसमें स्पान प्रोडक्शन आपने कहा कि हम अगर कोई फार्म इसको बनाना चाहेंगे, तो मेरे ख्याल से मुझे लगा जो आपकी प्रेजेंटेशन से लगा वो एक फार्मर के लिए खुद से प्रोड्यूस करना थोड़ा मुश्किल है. हाँ. So even पहले आपको कहा ना, at a small scale, you take this span from some source, है ना, किसी भी इंस्टीट्यूट से आप इसको span को ले सकते हैं. You don't need to farm this culture, है ना. It is only in case of when you start with a big venture, है ना. वहाँ पे you are interested in, जैसे मैंने आपको कहा कि आप खुद अपनी स्किल कोई डेवलप करना चाहते हो, है ना. तो आप कहीं से भी कोई मशरूम लाया आपने जो आपको लगा कि it is a good mushroom, it is इसका जो कोई भी quality parameter अच्छा है, तो you want to make a culture from there. जैसे आप देखना कि जैसे आपके पास ऑर्चर्ड है, आप कहीं पे जाते हो तो आप देखते हो कोई अच्छी सी वैरायटी किसी प्लांट की ना, तो you bring that variety and propagate that variety. तो इसी तरह से अगर आप इस चीज में ज्यादा डीप जाएंगे ना, तो sometimes you will see some mushroom कहीं से भी देखा आपने, तो you want to use that mushroom as a span, तो first we have to make a culture. तो उसके लिए आपको ये culture पहले बनाना है, then you can make a span. तो small scale के लिए just you get a span from any institute, then you can use that span for mushroom production. One quick question. Sir, in case of tissue brick method, why we mostly use the joint portion? Because it's less contaminated, na? There are chances कि once you take a mushroom, on the surface of the mushroom there will be so many organisms. Yeah? So in order to avoid the contamination, you take the tissue from the inside of the mushroom, and probably it has been seen at that part of if you take it from the joint portion, it grows better as compared to other tissues. Okay? Thank you, Dr. Thank you very much for this nice lecture. So after that, you will be having practical demonstration on this also. That Dr. will be showing in the lab conditions. यही सब जो आपने यहाँ देखा सुना है, यही practically demonstrate करेंगे lab में, हमें पैथोलॉजी lab में हम जाएंगे, इसके बाद चाय के बाद तो वहाँ होगा. Thank you so much, sir, for this lecture. It was very informative, and I hope our participants have been benefited from the same. Okay, sir, I think let's have. You take the tea. Everybody take tea, and after the tea, we will go to the division of the plant pathology lab. Sir, sorry. Yes. Sir, we have to present a memento and a certificate to our respectable resource persons. So now I would like to request Professor Ali Anwar, Head Division of Plant Pathology, to present a memento and a certificate to our research person, Dr. Ahmad, Associate Professor, Division of Plant Pathology, SKUAST-KASHMIR, Shalimar, as a token of gratitude, love, and respect for their living lecture. Sir has come all the way from Shalimar, so please give a big hand. Thank you so much, sir. Now I would like again request Professor Ali Anwar, Head Division of Plant Pathology, to present a memento and a certificate to our resource person, Dr.Tanveer Ahmad Wani, Associate Professor, Division of Plant Pathology, Wadura, as a token of gratitude, love, respect for their living. Thank you so much, sir. Now we will have a tea break. And okay.